like it's flowing in your blood. The thing must be flowing in your blood, that whatever the question comes, you get to write over it. The students of anthropology, we study human behavior. From that day, whatever comes my way, I look up to it, I go there, I talk about it. Hello and welcome to Next IAS. We have with us today Rajat Sambyal, the man who is viral on social media, whose tweet goes viral by the name 10 years into ashes and still I rise. He rose. He could not qualify civil services, UPSC, but he qualified Jammu Kashmir Civil Services examination and he got the post of DYSP, and we can congratulate him a lot for this great success. I have seen his success throughout his preparation, and I have seen how hardworking he is, how committed he is, how consistent he is, how you can say humble he is while taking advice from the mentors, from the teachers, and how curious he is. And these are some of the qualities that make him a part, that you can say make him a successful you can say motivator, as well as a successful candidate for the future bureaucracy of India. Now, we are going to have a very candid discussion with Rajat on this journey of UPSC. And first and foremost, I would like to ask a very simple question from Rajat, that how are you feeling nowadays after getting selected? Sir, first of all, I would like to thank you for your support and guidance. Sir, without your guidance, it wouldn't have been possible for me to get such good score in anthropology and mains and have a confidence even. Sir, I would consider that it was more than a student-teacher relation. You build a personal bond with me, guided me on small things, how to improve in anthropology, how to improve my personality. Whenever, sir, I was having some trouble related to the process, related to the journey and what steps I should take. So I asked you, and you were always upfront and always available for that. So, sir, this is a kind of sport which I was kind of lacking from certain years, and this small push from your side and small guidance from your side helped to get substantial improvement. So always I am thankful to you, sir, for that. And sir, these days after clearing, yes, it is a feeling of being comfort. Now you get to know कि हाँ एक जर्नी स्टार्ट होगी, आप एक जॉब पे जाएंगे, कहीं ना कहीं जर्नी करते हुए आपको ये लग ही रहा होता है कि अब एक काम मिले जिसमें हम जो सोच रहे हैं काम करना चाहता है वो एक्चुअलाइज कर सकें. तो JKPSC अब मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, तो सर उसके लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इन ए पॉजिटिव वे. एंड स्टार्टिंग में ही मैं 2 लाइन्स बोलना चाहूँगा जिससे जर्नी को एक जो सम अप है वो इन 2 लाइन्स में भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है. कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन. कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर. Wonderful, wonderful, बहुत ही अच्छा. One thing that I would like to say again, that you are very humble, and that is a trait you are with consistently in your life when you were preparing and when you were popular in social media. You are still very popular face in social media, especially among the UPSC aspirants and the people who are facing struggles in their life, in mental struggle or whatever kind of struggle they are facing. So you are very popular face, and you are labeled nowadays real life Sandeep Bhaiya. So what do you say? You say that you don't have a career. I think you have a very good career in social media influencer. You are a wonderful personality. You can choose another path, even in movies and all, right? But yes, there is no alternative of what civil services can provide to you, right? There was a time when I realized that you were a little bit in the doldrum, whether should I go for a think tank kind of, some research work and all, and on the other hand the civil services of the state was there, right? Yes. But you picked the right choice after struggling here and there. And I would say that this thing that you have achieved now, this success, right, people are connecting
with your persona. They are trying to be like you. You are a kind of role model for the youth. You are a role model for the people who have failed in their life, right? So you have proved, I think you started a kind of movement in social media, because before your tweet, nobody used to talk about the failures. People used to talk a lot about the successes, but hardly people talk about the failures. And your tweet was a kind of movement in the social media. If I, as an anthropologist, try to analyze this phenomena, so naturally it was under the, you can say, surface. And your tweet, it basically, the tweet was more of an emotion that you want to express. That emotions were read by the people in a positive light. And after your tweet, I think there has been many interviews, many people, they started coming out that failure, we should learn from failures, we should do this. So that is a very positive phenomena that came out of your tweet. So I must say that whenever anyone have such kind of things, so they must express, they must talk to people, they must just tell others that this is what I feel. Because telling is not just that you are expressing your emotion. Sometimes it serves the function of a larger community that you did. So that's wonderful thing that even I was very inspired the day I read your tweet, right? I think I called the very moment I saw your tweet, and after that it was everywhere in the news and all, right? Okay, so let's talk about a little bit of your struggles. I know that you failed, right? And I felt a lot of pain, with you in your failure also. And then you passed. So, how did you handle your failure? Especially the last one, when you came to know that, this was my last attempt and I can no longer become an IFS officer that you really want to become. So how did you handle that pressure other than the tweet? Because see, pressure is not just from the parents, it was from many corners that you do not realize even. Sometimes your peer group is also, your college mates also look up to you. So how did you handle all these? Exactly, sir. जब tweet जिस दिन the day the tweet the result came, so in the evening I talked with one of my friend, because I always try to live in the present and think better of the future. The day the result came, I knew that now I'm out of list. I was just waiting to know ki how much marks I am behind. If I would have been 5 to 6 marks, then I would have been expecting ki reserve list mein I may get my name. But when it was 11 marks, I was sure ki now the game is over. And I talked to one of my friend that what are the options available. He told me about public policy, then about law, then you can go abroad, and these all things. I realized that there are options available, and now this journey has ended. I have to look towards something, and if I look in a positive way towards something, it would be better. Rather than living in the past and spoiling the present, it's better to look up to the future in a bright way. Firstly, I did that. Next day, sir, next morning, I got up and I started a normal routine. Usually when I get up, I just go to the temple and have puja of 10 to 15 minutes I do, and then I get to my work. So I did that only. I was not knowing what to do now, because state services, when you fall from such level, you may not be in a position to think of now of state service. You may think, let's do something else now, leave this whole process. And there was one friend of mine. We started the journey together. I gave one break in between. He hasn't. So the before his attempts ended 1 year before. So I has his journey in mind. He applied for the MBA in US, and he got the call letter at that point only. So I was knowing one journey of my friend who was very closely associated with me, that how he did the stuff, and he was always there to guide me. He was always there ki whenever your journey, if it ended in a wrong way, so I will be there to support you. So that process I was knowing. So and there were other things also I was looking up to ki I will do something good. It might take certain years now. It won't come if the result comes positive. You are into service. You are into now your job will start. But if you look towards some other option, it may take 1 year, 2 years, 3 years. That journey you have to go through. But at the end, it's life. It's like you can say it's like a yes or no, and UPSC is like a 0-1 bit.
If you are selected, you are 1. If you are not selected, you are 0. A bit in that. So I accepted it as my fate, and there was one more theory which I always believe in, that whatever happens, happens for good. So I used to believe that it was good for me, that I couldn't clear it. Maybe something else is very bright and very better for me coming up. And as I have It is much better, I believe. You are much popular, right? But popularity is not one thing, and you will get equal opportunities. equal opportunity, yes. And I looked up to it, and I started living each day. Then from that day, whatever comes my way, I look up to it, I go there, I talk about it, and students were taking a lot of inspiration from me. I tried to did Twitter spaces, YouTube talks, and uske baad then I got into that PM Awards project. And that moment I was having a misbalance between what to do now, that whether I should go into this public policy field or I should again appear for state services. So as you guided me that state services, you should try for it. And many more people also talked to me, and they said that you should at least once try for me. My parents also said that. I took a call. It was again a risk, because sir, I resigned from my job, and being into that job wouldn't have added much to my CV, because I haven't completed the project. So it's kind of I gave up on my CV again. I took the risk, and it worked in a positive way. It might have worked in a negative way, but at the end I say ki life should be such that you have to take risks. Then only you can achieve your dreams. If you don't take risk, it will be a mainstream life and you won't be reaching to your dreams. So I think that trait helped me to clear the Undoubtedly, JKPSC. you have, you can say, great ability to stand when you are fallen, right? So that's a very good trait. I have seen some of your positive qualities. Personally, I have observed, right? You can say that the students of anthropology, we study human behavior. So naturally, I've studied yours, right, without telling you. And I found some good traits in your personality, like you are very committed to the course that you have chosen, right? You consistently do very hard work whenever it is needed, and you believe in yourself. You are confident in whatever you do. You may have, you can say, difficult times, difficult you can say choices you have to take, but once you have taken a decision, you work very hard. That's a very good thing. Now, since you are talking about your journey, you have got selected, and we all know that you were the one in the last attempt of yours in UPSC who scored 307 marks in anthropology. That was the highest of that year. Although you cannot qualify the exam, that is a different story, but you are the topper of anthropology, right? And I must congratulate you, right, being your mentor, and I have seen your growth personally. But still, I want you to share your strategy with the students who can benefit from your strategy a little bit, right? And if they are lagging somewhere, they can find that jump. So please tell about that story also. Sir, basically in 2020 attempt I got 253 marks. It was around 120 in paper 1, 119, 120 and 133 in paper 2, which I found a average score. That if you have, I was backing on my optional. I used to back on my optional that this thing I have to keep to my core. But getting a 250, 255 scores, you feel like that you haven't done exceptionally well. So, sir, at that moment, I came into your guidance, and sir, your sport helped me a lot phenomenally in that. And in a case, sir, I used to work hard, and but you need a direction also. At times we are doing something and we are directionless. So sir, being in touch with you, what helped me, that your personal correction, your personal checking in front of me helped me to know the psychology of what a teacher expects from a student to be written in the examination. More than knowing the knowledge, so books, everybody knows the basic books, everybody has the notes, they make their own notes. Like I also did on all topics. I had three pages of notes on all topics. Then I made the micro notes of that. I revised it. The revision part was good always. Concepts were known.
Whenever I have given the mains, I have always written all the questions. I haven't left any question also. So, but still I am getting the average score. That is painful for the person because you are giving it all. But when I, sir, contacted you and I saw the what was the key, I found out key I have to write more of current affairs into it. Because anthropology is usually considered, people consider it as a dry subject. You just read the past notes, yeah, toppers notes, and you will sail through. But what I found that we can add like masala to it. We can add the current affairs. We can add certain research papers to it. We can add certain Indian Sociological Society case studies are there, current case studies are there. And sir, I also garnered a lot from your notes also. And then I after having those compiled material, what I practiced in the test series which I wrote with you in the mock test, that how to use it now. Having the material is one thing, but in the 8 to 10 minutes when we write the answer, we have to represent those things in the examination, then only it is worthy. So I used to revise more and give your mock test, and there I used to write it, and then I used to feel now this question is prepared. And the mock test also helped in certain ways. When the 5 days holiday is there, I revised those mock tests also fastly. And if few questions are coming direct, if for example out of 19 questions, if 8 to 10 questions are direct, so there we write very fast and we get the more time for the next questions where we can think about. So that thing helped in mock test helped in those ways also. And so the sport and the belief you had on me, it also helped me to just go for it. I would honestly say that from 253 I was expecting 280 that I may go through, and certainly it was a substantial jump of 307. And getting in paper 1, which was not much good at in the previous attempt, it was around 120, and getting to 169, it was a phenomenal jump. And we never get to know how it worked, but certain things are there which I worked upon. And the teacher, it is a relative competition. When the other papers were coming, they were not having it, and I tried my level best. In every question I will add 1 to 2 current affairs, whether it is about any question of any topic. People consider that paper 1 is you can't add current affairs. You can, people keep on making current affairs for tribal part. But I tried in every question I need to have 1 current affairs, whether it is dominant caste, whether it is nature man spirit complex. Somehow I will have 1 case study for each. Wonderful. So what I can take out from what you say about your strategy is, one, that you have prepared your basic stuff very well. You have made micro notes of every topic that you have prepared well, and then you practiced a lot. Answer writing practice and taking feedback is another way of improving. And on the top of it, you have added many of the examples, case studies. Case study is the key for fetching better marks in anthropology naturally, and you have got that key, right? So similarly, I can say that you have written many examination, right? और तुम्हारा ओवरऑल भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव रहा है एग्जाम के लिए. जीएस में भी तुम्हारा स्कोप ठीक था, ऐसे में भी अच्छा स्कोर आया आपका. सो अगर हम जनरली देखें, अगर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए, सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक यू टू से अबाउट प्रीलिम्स, about essay, about means your strategy you can share with the people so that they can also get something about that also. So mains, I consider it's more kind of predictable on the previous year lines. That if I talk about GS 1, 2, 3, 4, if we analyze the 4 to 5 years papers, they are rotating around 60 to 70% around those themes only. And if we have a good basic notes and the adding the every day we are reading the newspaper, at least the explained page and at least the FAQ page of the Hindu and the Indian Express, whatever is suitable for the student, those things come very handy to build the concepts. And when we go into the final examination, we are able to represent those. And in mains also, there is a thing that we have to read less while, and we have to revise more, because then only it will be like it's flowing in your blood. The thing must be flowing in your blood, that whatever the question comes, you get to write over it. So making likewise as in the strategy of optional, we have to make certain notes, micro notes also of GS also, and then we have to add current to it, and everyday current we must be acquainted with. And also certain magazines you can consult to
have a go whether some areas you missed. Related, this is was my strategy about the mains, and I was whether I cleared the prelims in the attempt or not, I was always focused that I have to complete my mains before going to for the prelims. That when we are writing the prelims in May June, at that moment always before going for the attempt the main should be prepared. That was my strategy. So whenever I was having time, I used to go for test series whether I am not having the I am not haven't cleared the prelims, but I used to write mains answers, so that helped in mains. Prelims mein and in the essay also, sir, there is a thing that I was very having low score in essay. So when, sir, I contacted you, there was Praveen sir, and when I talked with Praveen sir, and they helped me to know what is the difference between a GS answer and a essay answer. What a teacher is expecting in a GS is quite different from what is expected in a essay. I used to write my essay like the GS also, only, and I used to think that I have written on the 10 concepts, I have written 20 facts, I have written so many things that, but at the end I am getting out of 250, I am getting 83 marks. It's like I haven't written anything. So they helped me to know that there is a essay is more about the flow. It's more about a concept being taught in a such a way that it's catchy and it's very soothing for the mind. Even Praveen mentored me when he used to prepare, right? So, sir, So, they gave he had a very nice grip. over essay. So my essay improved a lot in that, and I it more than improvement. When they used to teach me, I used to find it myself ki yes, I was wrong. I should have got out of 83, I should have got 60 marks only the way I was writing. So, sir, that helped in essay also. And in prelims, sir, I had 3 prelims. I was out, second, third, fourth attempt. Later on, I realized that there were few mistakes I was doing. Firstly, I was reading the paper 3 times. So while reading the paper fast, I was doing a silly mistakes. Correct, not correct. I've read a line which means something else while I read something else. So those mistakes helped me to improve 2 to 3 questions. Then, sir, I found out that I was not analyzing my previous year questions of prelims. Prelims दिया, प्रिपरेशन फिर स्टार्ट कर ली, लास्ट ईयर का प्रीलिम्स के पेपर देखा ही नहीं कि कहाँ गलती हुई थी. देन आई वर्कड ओवर ऑल माय प्रीवियस ईयर पेपर्स, वेयर वर द मिस्टेक्स, एंड फाउंड आउट दैट देयर वाज अ सेगमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी which was giving easy to medium questions, and but I was not able to do the well in the easy questions also. So I found out कि I should work on my Indian economy. I worked over it. It improved, and my take for prelims is this, that if we are doing the easy to medium questions with 90 to 95% accuracy of every subject, prelims would be sailing through. More than emphasizing on current affairs, which is very evolving, which is very challenging for the students, and we should focus more on the constant subjects. That can build our confidence and that can help in the final examination. तो prelims में सर मेरी यही strategy थी, and prelims and mains की फिर एक टाइम पे आके strategy combine भी हो जाती है when because the GS subjects remains the same, and if you have, अगर हमारे concepts about food corporation of India अच्छे हो गए हैं तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, वहाँ भी अच्छा लिखेंगे, एंड प्रीलिम्स में भी उसका एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता था. तो इस तरीके से कुछ थीम्स भी फाइंड करी थी कि जहाँ पे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. अबाउट MSP, इट्स ए बॉइलिंग टॉपिक, एंड उसके अराउंड रोटेट कर जाता था क्वेश्चंस. अबाउट सर्टेन डिक्लेरेशंस रोटेट कर जाते थे क्वेश्चंस. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, लिबरल थॉट्स क्या कहती हैं, लिबर्टी क्या कहती हैं, दोज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रोटेट अराउंड. तो सर प्रीवियस ईयर्स को थोड़ा सा देख के उससे फायदा हो गया कि थीम्स पता लग गई थी. So you are saying that for prelims and mains you have studied together. आपने कोई separate strategy नहीं रखी. Second, you are saying that you have identified themes, and through those themes you try to study both prelims and mains. And you did the answer writing practice. On essay you have naturally wrote a lot of essays, and through that you get to know what to write, how to write. So and even in personality test you performed decently well, I can say, and naturally that helped you to groom your personality also. Okay, so let's talk life beyond the civil services also, right? That is I think you are more comfortable with nowadays. You are guiding many aspirants. You are a Sandeep bhaiya to them, right? So वो वाली तो बात आप regularly social media पे करते ही रहते हो. So अभी ये बताओ कि what is your say goal in life now? Suppose you have got this job. What do you think in future? What do you want to do?
So basically, इतने साल my constant source of motivation has been to work for the people, mainly. कि wherever I will be posted and whatever I will be doing, that should be helping the people in certain ways. And I consider that if I have to, for my personal things, if I have to go there, it would have been better to go for the corporate sector. But if I have given this much years and this much of my dedication was there, so kahin na kahin the inspiration was to serve the people. And in India, we read and when we go to the field and we go to our village areas, we find out that there are challenges, and so those challenges has to be plugged. Secondly, sir, what I found out that the connect between a public servant and the public has to enhance and has to collaborate. That I should feel myself like them only. I am like them only. And when I feel in their shoes, I would have been in a position to work better for them. If I don't consider myself as a officer, to be honest. Every day I just inculcate in myself that I am a common person only. Wonderful. That's very good thought that you are telling yourself, and that I've seen in you, right? That you did not change much, right? Before success, after success, you are the same person. So that I try to inculcate in myself. Whatever people say, whatever things say, whatever the system says, and whatever it is, I will be just among them only, and it will help me to analyze those people in a much good way. And it's like a field work, what a anthropologist do. So for me, the service is like a field work, that I have to be in the field and in between them to understand them, help them. And like we have action anthropology, that we have to go there, we have to be with them, and we have to take the responsibility of whatever the result is, if it's good or bad. So it's like applying the anthropology from learning from you towards the field. वंडरफुल. कहाँ से इंस्पिरेशन आया था? मतलब इतना से देखो क्या होता है, कोई भी बच्चा जब तैयारी में आता है, तैयारी इतनी आसान नहीं है. बाहर वाले को लगता है कि कुछ नहीं है, पढ़ना ही तो है, पढ़ के निकल जाएगा. बट व्हेन यू आर इन द प्रोसेस, यू नो दैट पास और फेल डेली होते हैं. हम रोज का अपना एक टारगेट लेके चलते हैं, कितना कर लेंगे, नहीं हो पाता है, राइट? एंड इन दिस प्रोसेस यू माइट हैव लर्नड अ लॉट. बट कौन था जिसने आपको पहले इंस्पायर किया? कहाँ से इंस्पिरेशन आया? यू स्टार्टेड, आई थिंक 10 years यू हैव टेकन. सो कहाँ से आया था इंस्पिरेशन? सर कॉलेज में ही एक फ्रेंड था, सरफराज सिंह, जिसकी मैंने बोला कि जो यूएस में इज इन एमबीए. सर वहाँ से उसके साथ बात कर करके स्टार्ट हुआ था कि ही वाज फ्रॉम सैनिक स्कूल, तो उसकी प्री हैंड नॉलेज बहुत थी ऑफिसर्स की एंड ऑल. एंड उसकी भी सर इंक्लिनेशन इंडियन पुलिस सर्विस की तरफ से थी. तो सर उससे कहीं ना कहीं मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रहे स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी. तो ही यूज टू टॉक एवरी टाइम अबाउट थिंग्स, ही यूज टू नो थिंग्स, तो वहाँ से इंस्पायर होता था. देन सर जब जर्नी के बिटवीन आ गए, देन हाउ टू सर्वाइव था, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स रहे. कभी कभी सर आप जैसे अब मेरी सिस्टर थी, शी ऑल्सो स्ट्रगल्ड, उसने बैंकिंग सर्विस में जाना था, शी ऑल्सो स्ट्रगल टू गेट इन टू बैंकिंग सर्विस. सर अब मैं स्टोरी सुनता था, मेरे एक चाचू थे, दे डाइड एट द एज ऑफ 25 इन ऑपरेशन पराक्रम, इंडियन आर्मी में थे. वो अपनी लास्ट अटेम्प्ट में, उनकी ओटीए की अटेम्प्ट थी, उसमें सिलेक्ट हुए थे. तो सर वो एक स्टोरी सुनता था कि दे ऑल्सो केप्ट ऑन गोइंग फॉर द सर्विस वेदर वट एवर द नेक्स्ट इज, बट उन्होंने भी अचीव करा एंड एंड में अचीव करा. मुझे भी लगता था मैं भी अचीव करूँ, लेट हो जाए चीज़ें, तो वो बीच में इंस्पायर करती रही चीज़ें. एंड सर कभी कभी सर सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें सुनते थे किसी से. फादर को कहीं जाना पड़ा, उनको डीलिंग करनी पड़ी, कभी कहीं पे सिस्टर को कोई डीलिंग करनी पड़ी. तो सर लगता था कि सिस्टम में देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू इट बेटर. अब मैं ऐसा नहीं है कि आई थिंक कि मैं जाऊंगा सिस्टम में एंड आई विल बी जस्ट रेवोल्यूशनरी एंड मैं सब कुछ ही चेंज कर लूंगा, नहीं है. जितना सर मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, एटलीस्ट आई हैव टू परफॉर्म इट इन ए वेल वे, कि उस एरिया में मेरी तरफ से कोई ऐसा ना हो. जो मुझे चीज़ें फील होती थी जब मैं कहीं जाता था कि ये चीज़ें कैसी हैं, वो मेरी तरफ से मेरे एक एरिना में इम्प्रूव हो. तो सर एंड हमारी कंट्री के लिए काम आएगा, लोगों के लिए काम आएगा. एंड कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है कि सर सिर्फ ये चीज़ें नहीं थी, मेरे को अपना भी लगता था कि मेरी भी एक पर्सनालिटी एक बेटर वे में डेवलप होएगी सिविल सर्विसेज में. एंड सिविल सर्विसेज में जो भी सर, चाहे स्टेट है चाहे यूपीएससी है,
सर बेस्ट ऑफ लॉट गेट इनटू इट। एंड जैसे अब कॉलेज में होता है कि जितनी अच्छी फ्रेटर्निटी हो उतना अच्छा आप सीख पाते हैं, तो मुझे लगता था कि सिविल सर्विसेज में जितनी अच्छी फ्रेटर्निटी होगी उनसे सीखने को भी मिलेगा, लाइफ में, पर्सनैलिटी में, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। तो सर ये डिफरेंट सोर्सेज रहे कंट्रीब्यूशन के। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेशनलिज्म कहीं ना कहीं सर डीपली अंदर है एंड इट्स रनिंग इन सर। यू आर ए रोल मॉडल टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना। और खास करके आई थिंक दैट इज़ द एरिया, द यू नो योर होम स्ट्रिप इज affected by the drugs menace, I think. Yes, sir. And the people like you know, they can inspire a lot of youth to walk on a right path, right? Okay. As our prime minister also talks recently, मैं उनको सुन रहा था that he was persuading the sports person to you know put a positive light in this direction कि बच्चों को ठीक दिशा में डायरेक्ट करें। सो आई थिंक तुम्हारे ऊपर भी वही जिम्मेदारी रहेगी। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर नेचुरली विल बी गाइडिंग पीपल इन अ राइट डायरेक्शन, and from you know looking at others as a role model, you have become a role model to many of the people. That is what I can call is success, right? That is what success is in true sense. And you are like phoenix, I would say, right? Still I rise and you will keep on rising. My blessings, my love will always be there with you. कुछ बातें जैसे जो मैं हमेशा से ही कुछ देखता हूँ जैसे तुम्हारे अंदर भी कि स्ट्रगल है, बच्चों के साथ भी जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनको भी स्ट्रगल होती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज रहते हैं। सो what should be done in your opinion, right? How to de-stress them, how they can handle themselves? Do they need some kind of help, some kind of say counseling sessions, or they can find some strategy among themselves कि वो कुछ कर लें और स्ट्रेस ना हो? बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, नॉट जस्ट इन यूपीएससी वी डोंट फाइंड इट मच बिकॉज द किड्स आर मच ग्रोन अप, ग्रेजुएट आते हैं, but 23-24 suicides we have seen in Kota this year, and that's very concerning for people like us, right? Competition is sometime pushing you know people, our children's kids beyond. So how to handle? I think you can also be a brand ambassador kind of thing for such a movement if we start. सर एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ मैंने भी सर एनालाइज नहीं करी थी कि इतनी क्रिटिकल होती है। जब सर जर्नी स्टार्ट करी, स्कूल में A1 आ रहा है, 10th में 90% है, 12th में 90% है, इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेजेस में चले गए, कॉलेजेस से पास आउट हुए, नेवर आई वाज एक्सपोज टू कोई कि देयर इज अ डाउन इन लाइफ। सो सर बट डाउन सर आई से कि अप एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, इट हैज टू कम। एट व्हाट एज इट विल स्ट्राइक ए पर्सन, इट मैटर्स, इट्स डिफरेंट। किसी को 20 में होएगा, 30 में होएगा, 40 में होएगा, 60 में होएगा। सो सर सबको एक डाउन फेज में जाना ही पड़ता है, एंड वहां पे मेंटल हेल्थ कम्स इनटू प्ले फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मेरे साथ भी सर 2018 के अराउंड ये मेंटल फेज एक डाउन का रहा। बट सर द मेंटल काउंसलिंग इट्स द लास्ट पॉइंट, मतलब कि इट्स द लेटर स्टेज। इनिशियली वी हैव टू डेवलप आवर करेज दैट हम खुद इस चीज को फाइट करें, बिकॉज जितने हमारे अंदर पोटेंशियल है वो हमें पता भी नहीं होती है सर। द लेवल ऑफ survivability a human has, it's unphenomenal. We can live in a AC, so we can live in a non-AC area, we can live in any harsh conditions, humans have survived. So we all have that potential, just it's unexplored to us. So likewise the mental problems, when they come into being, we have the potential to face it. It's just firstly it's our own courage. Second sir, it should be taught with friends, with family members. It should be made a normal thing that I have been through it. I think every person in life goes through in certain extent. किसी का level 1 होगा, किसी का level 5 तक extremity होएगी mental issues की। So सर एक वो जो एक stigma है that should never be associated with a mental health issue. And अगर किसी का high भी चल रहा है तो किसी का अच्छा टाइम चल रहा है, then also the parents, the friends and the society should talk about it कि analyze, everything can happen, anything can happen any moment sir. We take it so casually, it's not even we know that we are going to live for the next day or not. एक सर मैंने महाभारत में ही एक सुना था, उसमें सर बोलते हैं कि एक पर्सन आया
युधिष्ठिर के पास उन्होंने बोला कि ये काम कुछ करना है कर दीजिए, उन्होंने बोला नहीं आप परसों आना। तो दैट साधु सेड डू यू नो दैट आप अगले सांस भी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आप मुझे बोल रहे हैं परसों आना। तो दिस इज द रियल थिंग एंड सर हम इस चीज को बहुत इग्नोर करते हैं। तो अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो दे गेट इनटू मेंटल डिप्रेशन, बट व्हेन वी टॉक रियलिटी, अगर हम किसी को सिखाएं अपने आसपास, हम रियल बातें करें कि देखिए लाइफ में कुछ भी हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में कुछ हो सकता है, एंड वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट इट इज, पॉजिटिव नेगेटिव लो हाई जो भी चीज, अगर हम एक्सेप्टेंस कर लेंगे ना किसी भी चीज की, तो सर उससे मूव ऑन हो ही जाता होता है लाइफ में, एंड वो हमें मेंटली स्ट्रांग रखने को हेल्प करेगा। एंड सर जैसे मेरी एक टेक है, मतलब कि अपने भी और जितने भी मैं फ्रेंड्स को देखता हूँ, सर सबका कुछ ना कुछ इश्यूज कभी ना कभी आते ही हैं। तो अगर हमने उन चीज़ों को विल रखी होगी, बात करी होगी उन चीज़ों पे, तो हमें हेल्प करता है। मोर ओवर सर अब इसके मैकेनिज्म्स क्या रह सकते हैं, कुछ लोग सर जैसे अगर लो चल रहा है, यू वर्क ऑन योर फिटनेस सर, जैसे आपने सर अपने आप को फिट करा, इट्स लाइक आप सर एक जर्नी तो कर रहे हैं, बट एक आपकी अपनी में एक फिजिकल फिटनेस इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि हाँ आई एम लुकिंग नाउ बेटर, एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। सर ये चीजें कर सकते हैं। देन सर हम योगा की तरफ जा सकते हैं। देन सर हम मेडिटेशन इज अ सोर्स, मैंने भी सर आर्ट ऑफ लिविंग का किया था, आई यूज्ड टू डू इट एवरी डे। तो वो सर वो चीजें आपको कूल एंड कंपोज करती हैं, स्पिरिचुअलिटी। देन सर एज आई टॉक्ड की विजिटिंग टू द टेम्पल्स, विजिटिंग टू किसी कोई मॉस्क जाए, चर्च जाए, जहाँ भी जाना है, वहाँ पे सर एक कामनेस है, एक पीसफुलनेस है, एक डिफरेंट एरिना है जिसमें हम ये एवरीडे वी आर इनटू दिस मटेरियलिज्म, मोह माया की जिंदगी में, कि ये लेंगे, ये फोन लेंगे, ऐसे करेंगे, वहां जाएंगे, शो मतलब कि इंस्टा पे ये करेंगे, वैसे करेंगे। सर जब वहां पे जाते हैं हम, वो दैट इज अ डिफरेंट एरिना, वहां पे नोबडी इज, एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज having the same energy, and that's a connection with the supreme soul। and जब हम वो करना स्टार्ट करते हैं तो ये चीजें थोड़ी सी इमेटीरियल लगती हैं, एंड वो कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं जब लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हमने बना ली होती हैं, जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं भी नहीं। मेलिनोस्की को आइडिया डाल रहे हैं। यस सर, सो कहीं ना कहीं मेलिनोस्की जो बोल रहे हैं, बिल्कुल सर, वो आउटलेट टू एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है हमारा। तो फंक्शन है, फंक्शनल, यस सर। तो सर ये कुछ चीजें होगी। फिर सर जैसे मैंने सर अगर ट्वीट करा या किसी कोई भी करे, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करो एंड उनको प्राउडली एक्सेप्ट करो। ठीक है, नहीं हुआ वर्क, किसी का बिजनेस था, किसी ने 10 साल लगाया, बिजनेस फेल भी हो जाता है, तो अब दैट इज यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ मैंने एक काम करा था, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट व्हाट एवर यू डू। कोई भी स्टेप है उसका, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि सर वी आर डूइंग इलीगल स्टफ, इट्स लीगली अलाउड टू अपेयर फॉर द एग्जाम एंड इट्स लीगली अलाउड टू फेल। तो सर जब लीगल स्टफ कर रहे हैं उसका कभी भी हमें अशेम नहीं होना चाहिए कि किसी भी चीज़ में। और अगर सर मुझे ऐसा लगता है, अगर इंसान अपने आप में सर सेटिस्फाइड, सेल्फ कंटेंटेड और पॉजिटिव है ना, नोबडी कैन गिव एनी, नोबडी कैन मेक यू नेगेटिव। वो इंसान खुद में भी आपसे इंस्पायर होना स्टार्ट हो जाएगी, यार इतनी बैड सिचुएशन में भी ये इतना पॉजिटिव चल रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा इंस्पायर होता हूँ, एंड यू बिकम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर देम। तो अपने आप में अगर आप पीपल थिंक कि दूसरे की एनर्जी ज्यादा सोचते रहेंगे, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, अगर हम अपने बारे में सही सोच रहे हैं, सही जी रहे हैं, तो दूसरा का आपको मैटर नहीं करेगा इतना। So it's very nice that you have grown too much, right? Wonderful, right? It feels very good and proud also, right? कि तुम इतनी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्योंकि पहले ऐसी बातें मैंने सुनी नहीं थी तुमसे, बट अच्छा है ना? और यही है that you become a kind of role model। अगर किसी को भी सक्सेस पानी है तो उसके लिए कुछ जो एसेंशियल ट्रेट्स हैं वो आप इस इंटरव्यू में रजत के अंदर देख सकते हो। अगर आपके पास वो आईज हैं, यू मस्ट फाइंड आउट दैट द सक्सेस इन एनी फील्ड is not just a product of your knowledge base, just your aptitude. Rather, it requires your positive attitude. If you have a positive attitude, you can get right knowledge, you can get whatever you want in life, you will find better guidance, you will find a proper path to travel with, right? So everything will fall in place। जो एक बहुत ही फेमस लाइन एक शाहरुख खान की मूवी में भी थी, सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है, राइट? अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो तो। सो नेचुरली ये सब चीज़ें रजत ने करके दिखाई हैं, और हमें लगता है कि रजत ने जितना लोगों को इंस्पायर किया वो सभी लोग
अपने सही पॉजिटिव डायरेक्शन में भी चलें और अपने अपने जो यू कैन से गोल्स हैं उनको अचीव भी करें। सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है सभी स्टूडेंट्स को जो जो अपने किसी भी फील्ड में, वेदर इट इज़ फॉर सिविल सर्विसेज, वेदर इट इज़ फॉर बैंकिंग, वेदर इट इज़ फॉर से नीट, किसी भी लाइफ की एक जर्नी में है तो यू मस्ट अचीव वट एवर यू डिज़ायर। और मैं अब लास्ट में एक बार पूछना चाहूँगा रजत से दैट व्हाट इज़ योर मैसेज टू दी पीपल, टू दी एस्पिरेंट्स, टू दी यूथ, व्हाट डू यू वांट टू से दैट व्हाट दे शुड डू एंड हाउ दे शुड डू, right, so that they can follow a positive path, they can follow a path where they can show or you showcase their own skill sets and naturally they can do something constructive. सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी प्रोसेस में है, कहीं भी जर्नी में है, किसी भी एम को अचीव कर रहे हैं, योर इंटेंशंस शुड बी प्योर. इफ योर इंटेंशंस आर प्योर, योर कमिटमेंट इज गुड and you are doing it for the sake of a holistic approach towards society, towards your own self, so naturally you reach to the level where you want to and आपको forces help करती हैं and आप एक success की तरफ move करते हैं. तो keep your intentions pure and naturally the things will come to you. So Rajat, you wrote JKPSC and you got selected into it. Normally जो UPSC aspirants हैं they have a kind of negative attitude towards state services. Normally जो IAS की तैयारी करता है वो state services लिखना ही नहीं चाहता है. Even while I was preparing, so we had such kind of attitude at that time also. Although yes, it gradually changed from the time when I was writing. What I have seen my colleagues, my friends, they were serving there. So what is your take on it? How do you see the state civil services? सर बिल्कुल मेरी भी एक थोड़ी सी अप्रोच ऐसी रही कि यूपीएससी के लिए हमेशा इंस्पायर्ड रहे. हमेशा जब भी यूपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है टोटल कमिटमेंट है, यूपीएससी का मेंस आ रहा है कमिटमेंट है, इंटरव्यू में भी उसके जा रहे हैं टोटल कमिटमेंट है. मैं तो इवन इन माय लास्ट अटेम्प्ट मैंने स्टेट का मेंस भी उस समय ड्रॉप कर दिया था, दो आई वाज हैविंग 1 month गैप. यस सर, आई थॉट कि टोटली यूपीएससी की तरफ करते हैं. उससे पहले भी सर 2 बार ये मेरा 4th अटेम्प्ट था जेकेपीएससी का, तो उससे पहले 2 बार मेंस भी लिखे थे. बट कहीं ना कहीं सर कमिटमेंट नहीं थी टुवर्ड्स स्टेट सिविल सर्विसेज एंड वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं सर. फ्रेंड्स का हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर रहता है टुवर्ड्स यूपीएससी, इट्स वेरी इंकरेजिंग. बट स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए यूजुअली थोड़ा सा हो जाता है कि उसमें थोड़ा डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा. तो बहानेबाजी, एक्सक्यूजेस कि नहीं मम्मी ये ऐसा थोड़ा अलग है, ये ऐसे है. तो बट एट द एंड मुझे लगा कि वो मिस्टेक्स थी. यूपीएससी दीजिए, यूपीएससी के अगर एक अटेम्प्ट आपने फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं पूरी कमिटमेंट से दीजिए. बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब आप जा रहे हैं यूपीएससी के सेकंड, अगर आपका पहली बारी में नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, तो साथ बाई साथ आपकी जो स्टेट है या उसके कोई एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उसमें तो एटलीस्ट आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए. एंड इट वुड बी बेटर कि आप अब इससे होता क्या है, हमें थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच रहती थी कि अगर हम स्टेट सर्विसेज में चले गए हमारी यूपीएससी से लिंक टूट जाएगा. बट मैं सोचता हूँ ये रिवर्स फिनोमिना है. अगर आप स्टेट सर्विसेज सेकेंड अटेम्प्ट के अराउंड आप पहुंचे हुए हैं अपने यूपीएससी के, एंड अगर आप क्लियर कर लेंगे, पहला तो सर एक सर्कल वहां पे बन जाएगा जो सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं स्टेट सर्विसेज के, तो उनकी जो एक अप्रोच होगी उससे आप सीख सकते हैं चीजें कि कैसे यूपीएससी क्लियर करें. तो वो एक बेटर सर्कल है रेदर देन आपका ओल्ड राजेंद्र नगर में अगर कोई सर्कल है, सिलेक्टेड लोगों का सर्कल बनेगा, उनसे सीखेंगे. सर आपकी जॉब सिक्योरिटी भी आ जाती है. एंड अगर आप यूपीएससी के इंटरव्यू में जाओगे तो सर वहां पे बात करने को, वहां पे एक इंटरेक्शन करने को एक पॉजिटिव लिया जाता है. एंड उधर भी मार्क्स आपके नेचुरली 10-20 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो सर वो भी एक बेनिफिट आ जाता है. एंड सर कहीं ना कहीं जो आप यूपीएससी में करने वाले हैं उसका आपको एक ट्रेलर मिल जाता है पहले ही यूपीएससी क्लियर करने से पहले. तो मैं तो बोलूंगा कि सेकेंड अटेम्प्ट अगर इंसान पहुंच चुका है तो उसको उसी कमिटमेंट से जो वो यूपीएससी के लिए कर रहा है स्टेट सर्विसेज लिखे, फॉर्म सब भरेंगे, देने भी सब जाएंगे, मन से नहीं करेंगे. फिर सर जैसे लास्ट में आई हैव ये जो अटेम्प्ट थी इसमें फिर मेंस मैंने पूरे मन से लिखा था कि अब इंटरव्यू भी पूरे मन से दिया था कि अब होना है, बिकॉज कहीं ना कहीं एंड हो गया था यूपीएससी जर्नी. बट अगर यही चीज पहले करी होती तो मे बी द थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. मेरी एक यूपीएससी में अगर मेरे को इंटरव्यू थोड़ा कम स्कोर मिला तो वो कहीं ना कहीं ये था, मैं आज भी मानता हूँ कि मैं जॉब नहीं कर रहा था इससे पहले, तो एक आपकी स्टार्टिंग में इंटरेक्शन के लिए एक पॉइंट ही नहीं बचा वो कि जॉब वाला. नहीं तो सर डायरेक्शन इंटरव्यूज का थोड़ा अलग हो जाता है. एंड
मैंने ये चीज़ सुनी है सीनियर से कि चाहे आर्मी का इंटरव्यू है या सिविल सर्विसेज का यूपीएससी लेवल इंटरव्यू है, दे टेक योर जॉब, योर वाइड एक्सपीरियंसेस इन ए वेरी पॉजिटिव वे, होलिस्टिक वे। तो सर मैं तो बोलूँगा सब एस्पिरेंट्स को, अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट या उससे आगे जा चुके हैं तो आप स्टेट सिविल सर्विसेज को पूरी कमिटमेंट से दो, उतनी कमिटमेंट से जितना यूपीएससी को देते हैं। वेरी गुड, क्योंकि स्टेट सिविल सर्विसेज भी काफ़ी इक्वली मौका देती है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा कम और ज़्यादा नहीं होता है, और बहुत सारे स्टेट सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। बट यस, अगर आप आईएएस बन सकते हो तो आईएएस के लिए बिल्कुल जाना ही जाना है, राइट। बट वो बाद में भी जा सकते हैं, स्टेट सर्विसेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और आजकल मुझे लगता है कि काफ़ी, जैसे कि बहुत सुधार भी आया स्टेट सिविल सर्विसेज में। ज़्यादातर स्टेट सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम पैटर्न है वो यूपीएससी के लाइन अलाइंड हो गया, जेकेपीएससी में भी सर टोटली अलाइंड है। अब मैंने सुना यूपी और बिहार में भी प्रोसेसेस आर गोइंग गुड, यहाँ पे भी अच्छे हो रहे हैं, हरियाणा में भी है, राजस्थान है। तो सर उसको इक्वली पावर से देना चाहिए। सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हिंदी के मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं, तो सर मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो सर कमिटेड थे, आज सर कोई हरियाणा में लग गया हुआ, कोई कहीं लगा हुआ, स्टेट सिविल सर्विसेज में लगे हैं। बट सब में एक फॉल्ट रहा कि पहले नहीं रहे कमिटेड, लास्ट में वहीं आए हैं। तो इट्स वुड हैव बीन बेटर अगर हम, अब मेरे से कोई सीख पाए या उनसे कोई सीख पाए कि पहले ही वो चीज़ क्लियर कर ली होती तो बेटर रहते। नहीं, बहुत अच्छी बात है। सो बेसिकली इंसान को अपना कैरियर का जो है ऑप्शन, जो है प्लान एक और लेके चलना चाहिए, है ना। प्लान बी लेके चलना चाहिए, जो नॉर्मली एक के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस पे कमिटेड रहो, बट साथ ही साथ में वो प्लान बी, जैसे नॉर्मली कोई मास्टर्स करता है, कोई कुछ करता है, सो इट्स मच बेटर दैट यू राइट स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड यू क्वालिफाई दैट विद यू कैन से मच लेस एफर्ट दैट यू आर गोइंग टू पुट इन टू यूपीएससी। सर एक मैं, मेरा फ्रेंड ही था, साथ में हम रहते थे। तो सर वो भी यूपीएससी के लिए कमिटेड, अब यूपीएससी दिल्ली बैठे हुए हैं, अच्छे कॉलेज से था, रामजस से। मास्टर्स कर रखी थी सर, नेट जेआरएफ का फॉर्म भर रखा था, पेपर देने नहीं जा रहा था आगरा में। तो मेरे को एक गट फीलिंग थी कि इसका पेपर होएगा क्लियर, इसको इतनी नॉलेज है पोल साइंस की। बट यूपीएससी में उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था ड्यू टू सी सैट। मैंने उसको बोला जा ट्रेन मेरे से कर, जैसे मर्जी जा। सर मैंने उसको पुश करके बस भेजा, मुझे पता था वहां पे ये कर लेगा। उसने सर क्लियर करा, ही क्लियर्ड जेआरएफ, ही वाज नॉट गोइंग एंड जेआरएफ क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब उसके माइंड में ये चल रहा था कि मैं जेआरएफ कर लूंगा, क्यों करूं मैं, नेक्स्ट मैंने यूपीएससी करना है, मेरे को तो यहीं रहना है ओआरएन में, मैं पढ़ते रहूंगा अभी। मैंने कहा एक ऑप्शन क्रिएट हो रहा है, नोबडी इज फोर्सिंग कि तू पीएचडी कर जाके, जेआरएफ नहीं करना पीएचडी अगर तेरा यूपीएससी क्लियर हो गया। सर उसका यूपीएससी में प्रीलिम्स नहीं हुआ, ही अप्लाइड इन कि अब मैं चलो पीएचडी कर लेता हूँ। अब सर 2 साल से अभी अनफॉर्चुनेटली उसका यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज में कुछ ना कुछ एक आप लगाइए कि कहीं पे सी सैट का इशू हो रहा है, कहीं पे साइंस का इशू हो रहा है, अभी नहीं कर पा रहा है। बट वो आज भी सर मुझे थैंक करता है उस चीज़ के लिए कि तूने मुझे भेजा। मेरी एक लाइफ एटलीस्ट आगे बढ़ चुकी है, सोशली आई डोंट हैव इश्यूज, फाइनेंशियली आई डोंट हैव इश्यूज, ठीक है। एंड मेरी एक पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगी 2 साल में, एंड मैं उसके बाद एक मेरे ऑप्शन खुल गया, मैं एपी आराम से अच्छी जगह पे लग सकता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सर यही चीज़ है कि मुझे लगता है कि और जो ऑप्शंस हैं, जो जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी तरफ भी राइट टाइम पे अगर अप्लाई कर दे ना सर, ही वाज अराउंड 24 एट दैट मोमेंट, तो राइट टाइम पे अगर अप्लाई कर दिया जाए तो ठीक रहता है। नहीं तो फिर सर बाद में उतनी लेथार्जिक हो जाता है इन चीज़ों के लिए इंसान। और सो संदीप भैया वाले ट्रेड्स तुम्हारे अंदर शुरू से हैं, पुश करना बच्चों को, अपने दोस्तों को, वेरी गुड। सो बहुत बढ़िया। स्टेट सर्विसेज या कोई भी प्लान बी का होना, इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट, बट यस कमिटमेंट वेयर नहीं करना चाहिए, राइट। व्हाट यू वांट इन लाइफ वो सबसे पहली प्रायोरिटी हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि ब्लाइंड हो जाए, है ना, और लास्ट में जाके इतना बड़ा शौक मिले जो कि आप डाइजेस्ट ना कर पाए। सो नेचुरली, राइट, बेसिकली एवरी सक्सेसफुल कैंडिडेट विल हैव अ जर्नी, राइट, और उस जर्नी में स्ट्रगल्स होती हैं, उसमें फेलियर्स होते हैं, बट failures they try to break you up, right? But if someone is trying to break you up or something is pulling you back, then if you have the desired will to move ahead, so you will build a stronger persona, you will build a stronger personality, you can say, and a much better
यू कैन से पॉजिटिव एटीट्यूड. सो ये सब चीज़ें जो हैं हम मुझे लगता है कि लाइफ की जर्नी में सीखते हैं, और तुमने भी बहुत कुछ सीखा है उसमें, और यही चीज़ें चाहिए भी लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए. So बहुत अच्छा रजत, no, it was very nice talking to you. It was wonderful, and I must thank you that you came over right from Jammu just to meet us. So thank you. Thank you so very much, sir. All the very It was best. my pleasure also, sir, to have So- such a wonderful interaction with you and sitting here, sir. All the very best. My best wishes always will be there with you. Thank you, sir. Chalo, great. Take care. Thank you.